So, hello everyone. तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो कि क्लास 10 साइंस वन के हम यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज देख रहे थे। सो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 5 के, जो कि हीट है। सो इसके 50 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो डू ज्वाइन फास्ट टू द लाइव स्ट्रीम। So we will wait for 2 minutes and then we will start. सो आप जल्दी से अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस वन का, जो कि चैप्टर 5 है हीट, उसके 50 एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू ये अभी आपके सामने, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। सो ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए इज कैलोरी, ऑप्शन बी इज जूल, ऑप्शन सी केल्विन एंड ऑप्शन डी इज वैट। तो जल्दी से आप बताइए लाइव चैट में व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जल्दी से आप बता सकते हैं लाइव चैट में कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ए बी सी या डी। सो ऐसा यूनिट ऑफ हीट यहाँ पर पूछा गया है। So the correct answer for this question will be here, that it is joule, which is option B. So ऐसा यूनिट ऑफ द हीट जो है, that is joule. So correct answer will be option B. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, that is heat always flows from, option A is cold to hot, option B hot to cold, option C low energy to high and option D is none. सो जल्दी से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा यहाँ पर। दैट इज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड, लो एनर्जी टू हाई, या फिर नन।
सो द करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज हॉट टू कोल्ड. क्योंकि हमने जो हीट ट्रांसफर यहाँ पर देखा था कि जो भी एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है, सो इट ट्राइज टू मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. सो वो हीट क्या करेगा, वो रेडिएट करते जाएगा. सो दैट इज फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट वी कैन सी दैट द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम. सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. The device used to measure the temperature is option A is barometer, option B is thermometer, option C is calorimeter, and option D is hygrometer. So आप जल्दी से बता सकते हैं what will be the correct answer of this question in the live chat. So the device used to measure the temperature is option A barometer, option B is thermometer, option C is calorimeter, and option D is hygrometer. So the correct answer for this question, that is option B thermometer. So thermometer is the instrument or the device जिसे हम कह सकते हैं that is basically used for the measurement of the temperature. So barometer जो होता है that is used for the atmospheric pressure, जो कि क्या मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है that is barometer. Calorimeter is the used for the measurement of the heat. So these are the various different instruments जिसका की यूज अलग अलग जो कि पैरामीटर्स जो है वो मेजर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं. सो लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर जो मेजर करने के लिए हमें डिवाइस पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा दैट इज ऑप्शन बी थर्मामीटर. सो हाइग्रोमीटर जो है बेसिकली so hygrometer that is basically used for the measurement of the water vapor which is present in the air. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है दैट इज ऑप्शन बी थर्मोमीटर. सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज ऑप्शन ए Celsius, option B is Fahrenheit, option C is Kelvin, and option D is Joule. So जल्दी से आप यहाँ पर लाइव चैट में बता सकते हैं what will be the correct answer of this question. The SI unit of temperature is option A is Celsius, option B is Fahrenheit, option C is Kelvin, and option D is Joule. सो जल्दी से आप बता सकते हैं लाइव चैट में कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. दैट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर जूल. So the correct answer for this question as it will be Kelvin. That is option number C. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स ऑकर्स बाय ऑप्शन इज कंडक्शन, ऑप्शन बी इज कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इज रेडिएशन, एंड ऑप्शन डी इज
evaporation. So heat transfer through solids occurs by conduction, convection, radiation या फिर evaporation. So the correct answer that will be here, that is conduction. So which is option number A. So heat transfer through the solids occurs by the conduction. So next question is, which mode of heat transfer does not require medium? Option A conduction, convection, radiation या फिर evaporation. सो ऐसा कौन सा हीट का ट्रांसफर का मोड है जहाँ पर मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट की वहां पर जरूरत नहीं होती. सो दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर इवेपोरेशन. So the correct answer that will be for this question, which mode of heat transfer does not require the medium, that is option C. Here is the radiation. Yes, so let's move forward with the next question. So next question is, the amount of heat required to raise temperature of unit mass by 1 degree Celsius is called. Option A latent heat, option B specific heat, option C is heat capacity, and option D is thermal energy. So what will be the correct answer that you can give in the live chat? The question is, amount of heat required to raise temperature of unit mass by 1 degree Celsius is called. So the correct answer for this question will be here, that is it is called as the specific heat, that is option B. So next question, which substance has the highest specific heat? Water, iron, copper या फिर aluminium? So which substance has the highest specific heat? Water, iron, copper या फिर aluminium?
So the correct answer for this question, the substance with the highest specific heat will be here that it is water. Option A. Because specific heat capacity that is of the water and the ice, जो कि यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में हमने वहाँ पर जब इस चैप्टर की स्टडी की थी, सो वहाँ पर टेबल में वहाँ पर अलग अलग वैल्यूज मेंशन की गई है दैट शोज दैट वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So the correct answer for this question will be option A, that is water. So next question, that is heat transfer in liquid occurs mainly by conduction, radiation, convection या फिर reflection. So जल्दी से आप बता सकते हैं what will be the correct answer of this question in the live chat here. So heat transfer in the liquid occurs mainly by conduction, radiation, convection या फिर reflection. So the heat transfer in the liquid occurs mainly by, so इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज कन्वेक्शन. सो दैट इज ऑप्शन सी. सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स आर. ऑप्शन ए पुअर एब्जॉर्बर्स, ऑप्शन बी इज गुड एब्जॉर्बर, ऑप्शन सी इज पुअर इमिटर्स एंड ऑप्शन डी इज गुड रिफ्लेक्टर्स. ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स, गुड एब्जॉर्बर्स, पुअर इमिटर्स या फिर गुड रिफ्लेक्टर्स. So the correct answer for this question will be here that is good absorbers. सो ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द गुड एब्जॉर्बर्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हियर दैट इज ऑप्शन बी. सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग. ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी इज कूलिंग, ऑप्शन सी इज चेंज ऑफ स्टेट एंड ऑप्शन डी इज एक्सपांशन. So the temperature remains constant during option A heating, option B is cooling, option C is change of state and option D is expansion. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेंज ऑफ द स्टेट.
So as we have seen that the temperature remains constant while the state is changed, as we have seen, that is the latent heat of the fusion and latent heat of the vaporization. These are the two concept जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में यहाँ पर स्टडी किया था कि जब भी स्टेट चेंज होता है दैट इज फ्रॉम द सपोज आइस इज देयर एंड इट्स चेंजेस इज स्टेट्स फ्रॉम द आइस टू द वाटर. सो कुछ अमाउंट ऑफ द हीट जो होती है वो बॉन्ड्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो इट इज यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड, और जिसकी वजह से वहां पर जो टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, सो इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो दैट इज ओनली द चेंज ऑफ द स्टेट जो होती है जब, तो टेम्परेचर वहां पर हम कांस्टेंट जो है वो हमें दिखाई देता है. सो द करेक्ट आंसर दैट इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग, दैट इज ऑप्शन सी, चेंज ऑफ द स्टेट. सो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपके सामने. Heat required to change state of substance without temperature change is, option A is specific heat, option B is latent heat, option C is heat energy and option D is thermal energy. तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइव चैट में. हीट जो रिक्वायर्ड है टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट टेम्परेचर चेंज, सो स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी. सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज latent heat. So heat required to change the state of the substance without temperature change. It is called as the latent heat. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which has the lower specific heat? So water, sand, iron या फिर ice. तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइव चैट में. सो विच हैज द लोअर स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर, सैंड, आयरन या फिर आइस. सो द करेक्ट आंसर for this, that is which has the lower specific heat, that is sand, option B. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज लैंड ब्रिज ऑकर्स ड्यूरिंग, ऑप्शन ए इज डे, ऑप्शन बी इज नाइट, ऑप्शन सी इवनिंग एंड ऑप्शन डी इज मॉर्निंग. So land bridge occurs during, so the correct answer for this question, that is option B, night. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सी ब्रीज ऑकर्स ड्यूरिंग, ऑप्शन ए डे, नाइट, इवनिंग या फिर मॉर्निंग.
सो पिछला जो क्वेश्चन था दैट इज ऑफ द लैंड ब्रिज, हमने यहाँ पर देखा दैट इज ऑप्शन बी, जो कि नाइट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ सी ब्रिज ऑकर्स ड्यूरिंग डे, नाइट, इवनिंग या फिर मॉर्निंग। So the correct answer for this question will be that is option A, day. So sea breeze occurs at the day and land breeze occurs at the night. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन द वैक्यूम ऑकर्स बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर इवेपोरेशन। सो आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन द वैक्यूम ऑकर्स बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर इवेपोरेशन। Yes, so correct answer that is the transfer of the heat in the vacuum occurs by that is option number C, radiation. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सरफेस इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट? सो ऑप्शंस आपके सामने है ब्लैक, वाइट, पॉलिश्ड सिल्वर या फिर रफ। सो विच सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट? सो करेक्ट आंसर जो होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन सी, जो कि है पॉलिश्ड सिल्वर। So option C here will be the correct answer of this question. That is, which surface is the good reflector of the heat? Option C is the correct answer. Polished silver. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज। ऑप्शन ए इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, ऑप्शन बी ओनली लेंथ वाइज, ऑप्शन सी इज ओनली विड्थ वाइज एंड ऑप्शन डी इज नन। So the correct answer for this question will be here. That is option number B, that is only lengthwise. सो एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड्स जो होता है हीटिंग करने के बाद दैट इज ओनली लेंथ वाइज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर विल बी ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज द phenomenon ऑफ एक्सपांशन ऑन हीटिंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर या फिर बैटरी। द phenomena of expansion on heating is used in thermometer, electric motor, generator and battery.
सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर जो कि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन देखा था कि थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं और डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज थर्मोमीटर। सो इट बेसिकली वर्क्स ऑन द फेनोमेना दैट इज ऑफ द एक्सपांशन ऑन द हीटिंग। Next question is, which metal expands most on heating? Option is iron, option B is copper, option C aluminum, and option D is silver. So the correct answer for this question will be here, that is which metal expands most on the heating. So जल्दी से आप बता सकते हैं what will be the correct answer of this question in the live chat. Yes, so यहाँ पर जो आंसर दिया है that is silver. Yes. सो लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विच मेटल एक्सपांड्स मोस्ट ऑन द हीटिंग, सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज एल्यूमिनियम। बिकॉज जो भी एक्सपांशन होता है यहाँ पर मेटल का दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो मेटल है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ऑन दैट बेसिस द एक्सपांशन विल बी ऑब्जर्व। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर, दैट इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। यस, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट विल बी द दैट इज व्हाई द ऑप्शन सी एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। यस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 kg सॉलिड टू द लिक्विड इज कॉल्ड। ऑप्शंस आपके सामने है, दैट इज स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या फिर हीट कैपेसिटी। सो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड टू द लिक्विड। तो आप जल्दी से बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, that is heat required to convert the 1 kg solid to the liquid is called, that is specific heat, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, या फिर heat capacity. Yes, so correct answer यहाँ पर इस क्वेश्चन का होगा that is latent heat of the fusion, that is option B. The heat required to convert, that is we are converting from the solid to the liquid state, so the amount of the heat which is required here, that is latent heat of the fusion. And latent heat of vaporization is basically the heat required to convert from the gas to liquid to the gaseous state.
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड टू द गैस इज फ्यूजन, वेपोराइजेशन, कंडक्शन या फिर रेडिएशन। Yes, so the heat required to convert the liquid to the gas is fusion, vaporization, conduction या radiation. So the correct answer for this question will be here, that is vaporization. So जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो amount of the heat required होगी for the conversion of the state from the liquid to the gas, so that is the latent heat of the vaporization. So the correct answer for this question will be option B, that is vaporization. So बढ़ते हैं next question की ओर. The rise in the temperature depends on option A mass, option B specific heat, option C is heat supplied, and option D is all of these. तो आप बताइए what will be the correct answer of this question. Yes, so the rise in the temperature depends on, that is mass, specific heat, heat supplied या फिर all of this. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा that is option D, which is all of this. So चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, that is which mode of heat transfer takes place in the air? Options: conduction, radiation, convection या फिर none. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर that is option number C, that is convection. So the which mode of the heat transfer takes place in the air, that is the convection. So next is which substance is the poor conductor of the heat? Option A copper, option B is iron, option C is wood, and option D is aluminium. Yes, so correct answer जो होगा that is for this question which substance is the poor conductor of the heat, that is the option C, wood. Because other जो भी options यहाँ पर दिए गए हैं that is copper, iron and aluminum, these are all the good conductor of the heat. लेकिन यहाँ पर जो wood है that is the poor conductor of the heat. So बढ़ते हैं next question की ओर, that is the instrument used to measure the heat is thermometer, calorimeter, barometer and hygrometer.
Yes, so correct answer. The instrument used to measure the heat is. So correct answer for this question that is कैलोरीमीटर. So heat measure करने के लिए जिस instrument का हम use वहाँ पर करते हैं, so it is basically that is calorimeter. Thermometer is used for the measurement of the temperature, barometer for the atmospheric pressure, and hygrometer for the amount of the water vapor content present in a atmosphere. So next question. Why are cooking utensils made up of the metal? Option A good conductor, option B is poor conductor, option C is cheap, and option D is lightweight. So आप बता सकते हैं what will be the correct answer of this question in the live chat? That is, why are cooking utensils made up of the metal? Options are good conductors, poor conductors, cheap या फिर lightweight. So the correct answer जो कि होगा इस क्वेश्चन का that is option number A, that is good conductors. So cooking utensils are made up of the metal because as metal is a good conductor of the heat. So next question आपके सामने that is why is water used as a coolant in car radiator? Option A low specific heat, option B is high specific heat, option C is low density, and option D is high density. So आप बता सकते हैं what will be the correct answer of this question. Why is water used as a coolant in the car radiator? Option A low specific heat, high specific heat, low density या फिर high density. So the correct answer for this question will be that is option number B high specific heat. So जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि वाटर की जो specific heat capacity है that is high, as we see water has the highest specific heat capacity, so due to which it is used as the coolant in the car radiator. So correct answer for this question will be option B here, that is high specific heat capacity. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So next question is heat transfer by movement of particles is conduction, radiation, convection या फिर evaporation. So heat transfer by movement of the particles is conduction, radiation, convection या फिर evaporation. Yes, so correct answer for this question will be here, that is option number C, that is convection. So बढ़ते हैं next question की ओर, that is which color absorbs maximum heat? White, red, black या फिर yellow. So maximum amount of the heat is absorbed by
that is option number C. Here is the correct answer, that is black. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Temperature is a measure of, that is option A heat, option B is coldness, option C is degree of hotness, and option D is energy. So आप बता सकते हैं what will be the correct answer regarding with this question. So temperature is a measure of heat, coldness, degree of hotness या फिर energy. Yes, so correct answer for this question, that is temperature is a measure of. So correct answer is option number C, that is degree of the hotness. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, that is which has the higher specific heat? Option A water, option B is sand, option C iron, and D is copper. Which has the higher specific heat? Yes, so correct answer for this question will be, that is option number A, that is water. So water has a higher specific heat capacity. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, that is expansion of the liquids is measured by. Option A thermometer, option B is calorimeter, option C is barometer, and option D is manometer. So यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड्स हम किससे मेजर करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, थर्मोमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर. So correct answer for this question, that is expansion of the liquid is measured by, that is thermometer. So option A is the correct answer here for this question. So बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, that is why do railway tracks have the gaps? Option A decoration, option B is expansion, option C contraction, option D is strength. Yes, so correct answer जो होगा यहाँ पर, that is why do railway track have the gaps? So correct answer is option B, that is expansion. As we have seen that in the railway tracks there are the gaps which are left over because जो भी यहाँ पर जो metal होता है due to the movement of the continuous movement of the trains on that railway tracks. So as this metal gets heat and gets expands, so there are the gaps which are left over in between the tracks, so for the expansion of that particular metal. So बढ़ते हैं next question की ओर, that is which gas expands maximum on the heating? Hydrogen, oxygen, nitrogen या फिर कार्बन डाइऑक्साइड.
यस, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा दैट इज विच गैस एक्सपांड्स मैक्सिमम ऑन द हीटिंग, दैट इज द हाइड्रोजन गैस. सो बेसिकली द एक्सपांशन ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द वेट. सो अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें हाइड्रोजन की, सो the molecular weight of the hydrogen here comes out to be that is 1. So basically as it is a lighter one, so it will expand as early because and up to the maximum end. So due to which that expansion of the gases, so hydrogen has the maximum expansion capacity on heating. So बढ़ते हैं next question की ओर. Which surface is the poor emitter of the heat? Option A black, option B is rough, option C is polished, and option D is dark. Yes, so correct answer for this question, that is which surface is the poor emitter of the heat. So the correct answer here will be option number C, that is the polished. So let's move forward with the next question, that is the sun transfers heat to the earth by. Yes, option A conduction, convection, radiation या फिर evaporation. So आप जल्दी से बता सकते हैं what will be the correct answer of this question. यहाँ पर लाइव चैट में आप बता सकते हैं that is which option is the correct, A B C या फिर D. कि जो सन ट्रांसफर हीट टू द अर्थ बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर इवेपोरेशन. Yes, so the correct answer, that is sun transfers heat to the earth by, that is option number C, that is radiation. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज हीट एनर्जी फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑप्शंस प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी या फिर वॉल्यूम. Yes, so the heat energy flows due to the difference in. So correct answer here will be the option B, that is temperature. So basically जो भी हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है, सो दैट इज बेसिकली कि टेम्परेचर जो होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर उसमें डिफरेंस होगा, सो देन ओनली द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट. दैट इज ओनली वी कॉल्ड इट एज द हीट ट्रांसफर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज व्हाई वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. सो ऑप्शन ए गुड कंडक्टर्स, ऑप्शन बी ट्रैप एयर, ऑप्शन सी इज प्रोड्यूस हीट एंड ऑप्शन डी इज रिफ्लेक्ट हीट.
Yes, so correct answer for this question, that is option number B, which is trap air. So because of the trapping of the air, the woolen clothes keeps us warm as they reflect the traps the airs. So due to which that the heat which heat transfer stops there, and due to which it able to make to sustain to the particular amount of the heat which is present, and that helps us to keep the body warm. So the correct answer for this question will be that is option number B, trap air. Yes, so next question is, which change involves absorption of the heat? Option A freezing, option B is condensation, option C is melting, and D is cooling. Yes, so which change involves the absorption of the heat? So the correct answer for this question here, it will be the option number C, that is the melting. जैसा कि हमने देखा था कि मेल्टिंग ऑफ आइस, सो मेल्टिंग ऑफ आइस में यहाँ पर जो है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही थी बाय फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स एंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द one state into the another state. So the correct answer will be here, that is option C is melting. Next question, that is the unit of the specific heat is option A, that is joule per kg degree Celsius, option B joule degree Celsius, option C is kg per joule, option D is joule per kg. So the unit of the specific heat. So correct answer for this question will be here, that is joule per kg degree Celsius. So as we have seen the formula, that is Q is equal to M into C into delta T. So as we have seen for the calculation of this specific heat capacity, so it will be that is Q divided with the M into delta T. So that is Q heat we measured in joule, then change in the temperature as in the degree Celsius, and mass in the kg. Yes, so specific heat capacity for this will be unit will be, that is option A, joule per kg degree Celsius. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट? ऑप्शन से आपके सामने ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी इज ग्लास, ऑप्शन सी इज आयरन, एंड ऑप्शन डी इज रबर. सो कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से गुड कंडक्टर है हीट का? प्लास्टिक, ग्लास, आयरन या फिर रबर? तो आप जल्दी से बता सकते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट? प्लास्टिक, ग्लास, आयरन या फिर रबर? Yes, so the correct answer for this question, that is which is a good conductor of the heat, will be here, that is option number C, which is iron. So option C is the correct answer of this question. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट इज रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन या फिर इवेपोरेशन? सो ये जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 44. More six questions, so we will complete the 50 MCQs of this chapter also. So heat transfer to direct contact is radiation, convection, conduction या फिर evaporation? Yes, so correct answer जो होगा इस क्वेश्चन का, that is option number C, जो कि है conduction.
So conduction will be the correct answer for this question. So that is the heat transfer through the direct contact is the conduction. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज विच फेनोमेनन एक्सप्लेन्स सी एंड लैंड ब्रीज, जो कि हमने देखा था कि सी जो लैंड ब्रीज ऑकर्स एट द नाइट एंड सी ब्रीज ऑकर्स एट द डे. So which phenomena explains the sea and the land breeze? Radiation, conduction, convection या फिर reflection. So आप बता सकते हैं what will be the correct answer regarding with this, that which phenomena explains sea and land breeze? Yes, so correct answer for this question here will be that is option C, that is convection. Yes, तो बढ़ते हैं next question की ओर. Why are handles of the cooking vessels made up of the wood? Good conductor, poor conductor, cheap या फिर hard? Yes, so correct answer for this question here will be that is the poor conductor. So which is option B. So because as they are made up of the wood, so to avoid the conduction of the heat, due to which we will not be able to get the heat shock, as it will be the poor conductor of the heat, so heat will not be transferred from that particular part of the cooking vessel. So the correct answer for this question here will be option B, that is poor conductor. So next question is, which property causes substances to expand on heating? Option A density, option B is temperature, option C heat, and option D is pressure. Yes, so the correct answer यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन का, that is option number C, heat. So the property that due to which the substances expand, so it is the property that is heat. So बढ़ते हैं next question की ओर. The rise in the temperature is inversely proportional to mass, heat, specific heat या फिर energy. So rise in the temperature is inversely proportional to. इसके लिए अब वही हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे कि जो कि हमने यहाँ पर स्टडी किया था, दैट इज Q इज इक्वल टू, कि जो Q होता है हीट, दैट इज M into C into that is change in the temperature, that is delta T. सो अगर हम यहाँ पर बात करें कि राइज इन द टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी चेंज जो हो रहा है टेम्परेचर का, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट. सो अगर स्पेसिफिक हीट अगर बढ़ती है, सो टेम्परेचर इज विल डिक्रीज. So that is the inverse proportional relation is between. So correct answer for this question here will be option C, that is specific heat. So बढ़ते हैं next question की ओर, that is which change releases heat? Melting, boiling, condensation या फिर evaporation. यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है? मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या फिर इवेपोरेशन.
Yes, so the correct answer for this question, that is which change releases the heat. So the correct answer here will be, that is option C, condensation. So condensation is basically the process of the cooling down in which the heat जो है वो released होती है for the cooling down of that particular substance or the metal. So the change in which there is a release of the heat. So correct answer will be here, condensation. Yes, so here we have done with our 50 MCQs of this chapter number 5, that is heat. सो नेक्स्ट जो कि हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. सो उसके हम 50 एमसीक्यूज नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग विथ एनी ऑफ द एमसीक्यूज और any other content, so do definitely let know in the comment box. So thank you everyone for joining. Thank you all.